Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar, and you're watching my channel, Muhammad Atiq Anwar, and Education for Us All. Welcome to our kitchen once more, where you find us making another dish. And as always, we like to combine things. So what we have here is boiled chicken, which has been shredded, and that is going to be combined with two dals. I think it's a split red one and then the brown dal, which is of course mash. So various spices over here: salt, turmeric, chili flakes, chili, garam masala, and fenugreek. Okay, so this is going to be made by our very expert Mrs. A Junior. So I'm going to ask her to take over. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं दाल चिकन। उसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए होगा, फिर हम इसमें प्याज को ब्राउन करेंगे, दैन हम अपनी दाल को इसमें डाल के स्पाइसेस ऐड करके फिर उसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि रेसिपी कैसी बनी है। Okay, so the oil's gone in and we'll let that warm up. I think about 3 spoons there. और अब इसमें हम अपना प्याज ऐड करेंगे, उसको हम थोड़ी देर के लिए ब्राउन होने देंगे। फिर हम इसमें अपने टमाटर और स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा जी, कितने प्याज थे? प्याज 2 अदद। Okay, two onions going in. We're going to let those brown now. अब हम इसमें अपनी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, पेस्ट है उनका, तो ये हमने इसमें ऐड करना है। Okay, so as I say, we freeze the ground chilies, so they've gone in. अब इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे, 2 अदद टमाटर हमने देने हैं। At the same time, we're adding 2 tomatoes. We'll give that a good stir. Let's create a nice paste. It's going to take a while for the tomatoes to soften. अब इसमें अपना जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून। Okay, 2 tablespoons of ginger garlic paste. Give that a good mix. अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। Add in the spices. कौन सी spices थे? ये हमने सूरज मिर्च ऐड किया, गरम मसाला था, नमक एंड हल्दी। Okay, so each quantity about a tablespoon of turmeric, chilies, garam masala. अब इसमें हम अपनी दालें ऐड करेंगे। Okay, so the paste is ready and we're adding the dals. Like I say, it's red split dal and mash. Going to let that cook for a good 10 minutes, I think. Okay, the dal has cooked really nicely now. We're going to add the chicken. So as I said, this has already been shredded and boiled. अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। इसको हमने पहले ही अलग अलग कर लिया था, मैश कर लिया था, तो हम इसको अब इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, 10 मिनट के लिए। Okay, it's going to be cooked for about 10 minutes now. That's coming on nicely. अब हमारी दाल तकरीबन रेडी हो चुकी है। हम अपनी दाल के लिए अब इधर साइड पे तड़का बना लेंगे, फिर हम इस तड़के को दाल में मिक्स कर देंगे। Okay, so we're going to create the tarka now. Dal and chicken is ready. So what's going in? अब सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। Okay, so let the oil warm up there. अब हम इसमें अपना गार्लिक ऐड करेंगे। Okay, so putting the garlic into the oil, this process was known as tarka. What else are we adding, you think?
अब हम इसमें अपने तड़का There you ऐड go. करेंगे। I love that sound. Tadka. Anji. Sit. Give that a good stir. And there is our chicken dal. अब हम अपनी दाल में मेथी ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसके अलावा हमारे पास धनिया भी है ऐड करने के लिए, वो भी हम ऐड करेंगे। Okay, we're garnishing the chicken and dal now, viewers. So the fenugreek has gone in, methi, as we say, and lovely, lovely, lovely dhania, coriander. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी दाल चिकन रेडी हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, हमारी आईडी को, हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। There we have it, viewers. Our lovely, lovely chicken dal dish. Okay, I do hope you're going to try it. It really is nice and simple to make. Tell all your friends about it. Good. Until the next time, look after yourselves, look after others. अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।